ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ अस्माकम् अद्यतनविषयो अस्ति अभ्यास षट्पञ्चाशत् इति अत्र द्वितीयभागः। उदाहरणवाक्यः पृष्ठक्रमाङ्क 113 113 सारी कस्मिन् 113 सत्यं। उदाहरणवाक्य प्रथम सौभाग्यवती स्त्री हारं नूपुरं कङ्कणं सिन्दूरं तिलकं कण्ठाभरणं च धारयति। सौभाग्यवती स्त्री generally the Saubhagyavati is like a Visheshana for Stree, and it can be, this is like the Shatra Pratyanta Rupa, but here they have given as an Avyaya Shabda itself, I think, right? They have given us Kriya Visheshana Shabda. That's good. Artha? Stree is also, it is karta, right? That Stree is just Shabda. Just, Shabda. karta in the sense Sanya only. It is like Sanya only. So haram, mala, anklet, nupuram anklet, kankanam bangle, sinduram, tilak, that we kumkum on the forehead, tilak could be chandan, I guess. Satyam. And kanthabharanam. Last time Abaji talked about that neck thing which is very tight. Right, correct. And the tight the three wears it. Yeah, wears it. Dharayati. Also, haram nupuram kankanam kasmin vibhakti asti? सत्यं द्वितीया एकवचनं सर्वे। फेनिलेन वस्त्राणि प्रक्षालय एकवचनं। द्वितीया एकवचनं। साबुन से कपड़ों को धो। प्रक्षालय कस्मिन् लकार? प्रक्षालय is it धो or is it फैलाओ? धो। प्रक्षालय means more to spread, isn't it? प्रक्षालन is to this, no? To clean. Yes, prakshalan is to clean only. Spread will be that other dhatu that came in the earlier one, that kaun si abhyas mein it came in chatur panchashat. Tan dhatu phailana is to spread and prakshalan is to clean. फेनिलेन साबुन से वस्त्र को प्रक्षालय कस्मिन् लकारो अस्ति? प्रक्षालय लोट लकार। तृतीय मनुष्येषु एकतः एक और विद्वत्ता शौर्यं धैर्यं सौख्यं सौंदर्यं गुरुत्वं च दृश्यते। अपरतः दूसरी ओर दीनता खिन्नता मूर्खता भीरुत्वं कुरूपत्वं च दृश्यते। This is all pretty simple only. एक और ये सब, दूसरी ओर वो सब। Shows, right? Shows. He shows it is shown. Hold on. And on the other side, on the hand, has all these qualities as well. But how would you translate drishyate? Shows, demonstrates. Demonstrates would be darshayati. Acha.
Drishyate means we see these qualities in. It is seen. दिखाता है. It is seen. We see would be. दिखती है. Okay, it is seen. मनुष्य. वैसे दिखती है सत्यम. It is seen. I mean, we see will just be lat lakara, na? Lat lakara uttama purusha bahuvachanam will just be we see. But it is seen. Manusheshu, where? In manushya. That is why saptami bahuvachanam is given for manushya. Manusheshu. Sarva, like how in Upanishad also many places, sarva bhutatma drishyate. It is seen as atma of all, etc. etc. Astu agre. Gunanam garima, anoho anima, lagunam lagima, mridunam mradima, mahatam mahima cha sarvatra drishyate. Again, sarvatra drishyate, seen everywhere. That is the meaning. Gunanam garima. कैसे बोलना है? गुणानाम गरिमा. Shashti is correct. हाँ, correct. And in Hindi, if you want to say? हिंदी में कैसे बोलते हैं हम? गुणों में. No, not may will be something. गुणों की. हाँ, गुणों की गरिमा. वैसे हम लिंग डाल के की स्त्रीलिंग विपुटा. That is why गुणों की गरिमा. Because in Hindi, अणु की अनिमा, अणु की अनिमा, अणु और सूक्ष्म के सूक्ष्मत्व वैसे. Sorry, I think there is a lag, na? There is some kind of lag, it seems like. Okay, it's a good Wi-Fi. It will get better. Okay, so this guno ki we put in Hindi, but that does not mean garima is a strilinga shabda in Sanskrit. Should be careful of that. Guno ki garima we say, because in Hindi the linga of the object matters. Meri mata. But in Sanskritam that is not there. Mama mata, mama pita, both. That is a difference. You have to keep careful. Panchama, Brahmanaha dhanam grihnati. Is this Kartrivachya or Karmavachya? ग्रहण करता है. कर्मवाच्य. कर्मवाच्य? नहीं, sorry, कर्तृवाच्य. कर्तृवाच्य. हाँ, it is Kartrivachya. Kartrivachya. First is the lag of the internet and second is my network. So altogether it's too late. Hold on. Let me change my connection quickly. Hold on. This is supposed to be the worse internet. Is it better? Maybe it's better. Better other days. It's Right okay. now the cannot be seen. Acha. Hold on. Can you see me and hear me okay? Yeah. Okay. And the screen? Yeah. Okay. It's Shashta. okay. Slightly blurry, but it's okay. हाँ. Don't worry. Okay. Brahmanah Now it's dhanam. clear. Okay. Brahmanah dhanam grihnati, grihdatu. But which dhatu is this? Grihnati, grihnatu. Which dhatu? Grah. हाँ. Grah dhatu. Grah has become grih. Why? Grah to grih. We looked at this yesterday. Yeah.
Sorry. Same Did this yesterday. same karya as vach tu uktavan, vach tu vacha uktavan. Samprasaran, that Grahyadivi, that one. हाँ, ग्रहिज्या वैद्यदि व्यष्टि विचति विश्यति पृच्छति Yeah, विचति that one. इति च Yeah. हाँ Correct. सो गृह्णाति गृह्णातु अग्रह्णात् गृह्णीयात् ग्रहीष्यति वा all five lakaras lut lot lung विधिलिंग लृट् धनिकः धनं संगृह्णाति which is this कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य Kartruvacha, he is doing it. सत्यम पुत्रंच अनुगृह्णाति सेम धन को संग्रहण करता है और पुत्र को अनुग्रहण करता है ब्लेस अगर ऐसा होता है कि उसके पास संग्रह होता है then it would be कर्मवाच्य, right? करेक्ट और संग्रह हो हाँ धन संग्रह होता है वैसे उससे मतलब उसके द्वारा थ्रू धनिकेन धनः और धनम ओनली सॉरी धनम बिकॉज नपुंसकलिंग धनिकेन धनम संगृह्णाति संगृह्णति that way if you say then dhana is getting sangrahana through dhanika sangrihnati that संग्रहणमस्ति whatever संस्कृत बनाओ वह सुंदर स्त्री ग्रीवों में ये सब ऑल दिस वह सुंदर स्त्री ग्रीवों में whatever धारण किए हुए हैं तो सॉरी वह सुंदर स्त्री धारण किए हुए हैं इतना पहले ओनली दिस मच हाउ विल इट बी सा सौंदर्यम स्त्री ग्रीवे सौंदर्यम is the like saukyam like vidusham not vidusham vaidushyam etc that is the state of being that way B. here sundara Yeah. is a visheshana Sundaram. sundari स्त्री ना Sundari because Srilinga. हाँ Yeah. सा सुंदरी स्त्री धारण किए हुए हैं कैसे Dharayati, right? धारयति and then किए हुए हैं धारयति will just be लट लकार तो धारण Lat lakara, correct. करता करती है बोल रहे हैं ना धारण जबकि धारण करते हैं ऐसा होगा हाँ तो कैसे संस्कृत भाषा में अधारणात् धारणत will be किया धारण किया किए हुए हैं present continuous tense we have to use correct so how to use that It is that ing, right? That continuous. हाँ ing Way, that is ing like हाँ which so how to say that correct. It's a good point. Hold on. there is a hint there is a pratyaya you can use which pratyaya शत्रुशानच में से satyam samyak हाँ so say let's say shatrushu only his answers शब्द नहीं आएगा मुझे no try लॉजिक की आप try so dhara shatrushanach if you have to say for Srilinga shatru pratyaya will take shatru pratyaya how will it be see shatrushanach also took some time so this also will take but it came so this also will take some time when it comes Shatrushanach will be like Shatru will be like Bhavat, right? We talked about that. धारयत Dharayat. dharayat is for napumsakalinga this is strilinga so This is Srilinga. Shatru Srilinga. So Dharayati. हाँ
Then dharayati is correct. And then हुए है, धारण किए हुए हैं. हाँ, satyam. See, it came. It just needs some time, that's all. सा सुंदरी स्त्री. Lot of time. It's okay. सा सुंदरी स्त्री धारयति अस्ति. किम किम धारयति, के और कानी कानी. मोती, ग्रीवा में मोती की माला. ग्रीवे हारम, है ना. और ग्रीवायाम मोत्याहारम. नहीं, हारम इज मोती की माला ना. मोती की माला ही हार है. हारा. I've taken care of it. हाँ, Right. तो ग्रीवायाम हारम. देन कर्णयोहो, कान में दो कान है ना. कर्णयोहो, ये क्या है, कर्णपूर के लिए क्या है, कर्णपूरे, कर्णपूरौ, कर्णपूरहा है. हाँ, फर्स्ट वन कर्णपुरम. कर्णपुरम एक है. सो टू इफ यू वांट टू से कर्णपुरौ इट विल बिकम. हाँ. Then So when we say Karnapurao, we don't have to say Kanve. We don't have to say Karne Karnapurao. Karnapurao is good enough. हाँ, कर्णयोः कर्णपुरौ you can say, और कर्णपुरौ ठीक है. But what if some पूर्व पक्षी may come and ask, that means which ear is she wearing 2 earrings in? Somebody can ask. Is she wearing both earrings on the left ear or both on the right ear? Some fellow can ask. I mean, it is enough to say Karnapurau, but you can also say Karnayoho, Karnayoho, correct. And naak mein bulak. And they have given in the center. Translate. अच्छा, कहाँ दिया है सेंटेंस नाक में, कान में कर्णफूल ऐसा दिया है ना. हाँ, सेंटेंस में सत्यम. हाँ, सेंटेंस में कान में दिया है. करेक्ट. हाँ, तो नाक में बुलाक कैसे? नासिकायाम. सम्यक. देन नासिकायाम. क्या कहना है भाई? नासाभरणम. हाँ, बुलाक. नासाभरणम. नासिकायाम नासाभरणम. हाथ में कंकण. सेम लाइक कर्णयोः. हस्ते. कर्णयोः तो हस्तयोः. हाँ, हस्तयोः कंकणम. कंकणे व्हाटएवर, है ना. कंकणम. कंकणे दो है ना. दो हस्ते हैं तो दो कंकण. कंकणे. और बाजूबंद. बाजूबंद केयूरे. केयूर. तो हस्तयोः कंकणे केयूरे च. हाँ, देन बाल पर. ललाटे. दिस इज ललाटा. ललाटे तिलकम. भाल पर तिलक. एंड हाँ, और रामरक्षा स्तोत्र में यार किसी में आता है ललाटे तिलकम. हाँ, ललाट आता है बहुत. सत्यम. या इट इज कॉमन. इट इज फेयरली कॉमन. एंड आंख में काजल. आंख चक्षु. तो आंख में मतलब Again, you have to say Chakshau. दोनों. हाँ, but that is not चक्षौ ना. चक्षौ is only one. चक्षौ is चक्षु is the प्रातिपद. चक्षुष is प्रातिपदिका ना. तो चक्षुष चक्षुष will decline how? Yeah. सप्तमी द्विवचनम you have to use. दो चक्षु में. चक्षुषोः. चक्षुषः चक्षुषो. चक्षौ चक्षुषोः it will become. तो चक्षुषोः काजल. अंजनम. अंजनम है ना. क्या है? अंजनम. काजल इज अंजनम. चक्षुषोः अंजनम. चक्षुषो, और यू कैन से नेत्रेषु. नेत्र. और यू कैन इवन से, और नेत्रेषु नहीं, नेत्रयोः. एंड यू कैन आल्सो, हाँ, नयन. नयन शब्द आल्सो यू कैन यूज. नयनयोः और नयनम इट इज. सो रामयोः, that is पुस्तकयोः. नयनयोः. और you can even say
Akshi. Akshi Shabda is there, na? Akshi, how in Chandogya? So 8th chapter. That Guru will tell Indra, Akshi Purusha. Akshi Purusha, yeah, the I in a person, the I. That Akshi Shabda also you can say and say Akshi no ho, I think. Akshi no ho, you can say. पैरों में पायजेब पादयोः हाँ नोपुरौ नोपुरौ दो नोपुरः is pullinga द्वितीया द्विवचनम is also नोपुरौ not only नपुंसकलिंग द्वितीया बहुवचनम is no हाँ then धारणके हुए धारयति अस्ति नहीं ओ औ पादयोः नूपुरौ धारयति अस्ति द्वितीया सौभाग्यवती नारियां सभी अलंकारों को धारण करती हैं. नार्यः, right? सौभाग्यवती नार्यः, right? You can use Stri Shabda because they have given, na? Naryaha is correct. Narya is not wrong. But Stri also we can say and say. Or you can use Striyaha. Striyaha. Satyam. Satyam. Striyaha. So Saubhagyavati. Striyaha or Naryaha. Then? Sarvan. See the next Shabda. For Alankara, how to say Alankaro? Alankarani. Alankarani. So Sarva. So what would be Sarva? Sarvani. Sarvani Alankarani. It will follow that only. Sarvani Alankarani. Sarvan will come if the next one is Pullinga Dvitiya Bahuvachanam. Then Sarvan Raman. Sarvan Shokan. Sarvan, the Laukau in Upanishad, etc. Sarvan Shokan. It comes. No, but in the Sarva word, Dvitiya Bahuvachanam is... Dvitiya. Not here we don't say Dvitiya. No? I mean, ye Narya, these Naryaha, सभी अलंकार को धारण करती हैं. So they are doing dharana of all alankara. Dvitiya Bahuvachanam you take for which linga? Pullinga or Strilinga? Sarvani. If it, because you said Alankarani, right? If it is Alankarani, it is Sarvani. If it were Alankaran, then it is Sarva. Yeah, then it is okay. But it's not Alankaran. Alankaram is an Apumsakalinga word. Correct. Dharayanti, Satyam. Cha, then Vidavascha. Vidava Striyaha. Na dharayanti. Vidavascha na dharayanti. Na generally will not complete a sentence except Natu. They will say something like that. Tritiya. Va Sundari Sabun se Ango. So here they have not given Stri and all. Va Sundari. कैसे बोलना है? So Saha Sundari. Saha Sundari. It's not Saha. Sa. Sa Sundari. Then? Sorry. Then? Saha Sundari. Then after that it came Fani Lena. Penilena. Pa. Not fa. Pa. Feni Lena. Pa. Penilena. 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 And then will it be like Angan? Angan Prakshalatva Adarshe Mukham Pashyati. Samyak. So wait, one second here. Sa Sundari Penilena Angani, because it is Angam.
right? It is a napumsakalinga shabda, so it will be angani. But then there is an important point. Prakshalitva, which pratyaya? त्वा प्रत्यय, right? करके. Tva pratyaya, satyam. But pra upasarga purvak is coming in, prakshalan. और ल्याप हाँ. यूज करना पड़ेगा. Lyap. So it will be, what will it become? प्रक्षालय. प्रक्षाल्य. सम्यक. हाँ. प्रक्षाल्य आदर्शे दर्पणे मुखम पश्यति. Then the other one, agre. Kangi is prasadhini. Okay. So prasadhini means prasadhani. Sorry, prasadhani. हाँ. So प्रसाधन्या. हाँ. Correct. कंगी से. हाँ. वेणिका. वेणीम. हाँ, वेणिकाम. वेणिका को पद्धति. वेणिका पद्धति. बध्नाति. बध्नाति. हाँ. सा सुंदरी फेनिलेन अंगानि प्रक्षाल्य मुखम दर्पणे मुखम पश्यति. आदर्शे मुखम पश्यति. प्रसाधनी प्रसाधन्या च वेणिकां बध्नाति. चतुर्थ, सिंदूर सौभाग्य का चिन्ह है. सिंदूरम. देन सौभाग्यस्य. हाँ. सौभाग्यस्य चिह्न अस्ति. सौभाग्यस्य चिह्नम् अस्ति. चिह्नम् अस्ति. सम्यक्. पंचम, स्त्रियः. Correct. Then मेखला and all, you can quickly see here. मेखला, करधनी is मेखला. हाँ, बोलिए. करधनी. हाँ, करधनी. Then हंसुली is ग्रैवा. What is this? ग्रैवेयकम. Then कुंडल is कुंडलम only. स्त्रियः, ये क्या? करधनी. हाँ, करधनी. ग्रैवेयकम. हाँ. कुंडलानि. कुंडले. कुंडले. ठीक है. कुंडले च. और धारयति. सम्यक. और स्त्रियः बोल रहे हैं ना हम. स्त्रियः बहुवचनम. सो धारयन्ति. सम्यक. धारयन्ति. देन और इत्र लगाती है. तरस गंध तैलम. गंध तैलम. हाँ. लगाती है. हाँ. निक्षिप्ति. given there the word is nikship. हाँ. निक्षिपति. निक्षिपंती है. हाँ. हाँ. So there is one rule here in Sanskrit that we often overlook. When this or comes, right, and जहाँ भी अगर और है ना, और ये after the next one we will put च. और पैर में मतलब पादयोः च. और पैरों में, not च पादयोः च. विधवाश्च, प्रसादिन्या च, and here गंधतैलं च. गंधतैलं च what was it? निक्षिपन्ति. हाँ, सम्यक. षष्ठ, ब्राह्मणवत् is ब्राह्मणवत् only. ब्राह्मणवत्. Correct. हाँ. ब्राह्मणवत्. विद्वान. देन बनो को क्या बोलेंगे? भव. करेक्ट. भव. क्षत्रियवत्. नीरोगः. हाँ, बोलो. नीरोगः भव. सम्यक. देन वैश्यवत्. धनिकः. would it be? सम्यक. और धनी बहुत आर ओके. नहीं, एक वचन में बोल रहे हैं ना. ओनली वन एक वचन. हाँ. हाँ. शूद्रवत्. हाँ. च. परिश्रमी is. सम्यक. परिश्रमी is परिश्रमी. करेक्ट. च परिश्रमी भव. परिश्रमी च भव. नहीं, च परिश्रमी. ऑलवेज
Parishrami bhava will be at the end. So cha parishrami bhava. Then saptama. संसार में कैसे बोलना है? संसार में संसारे, दैट इज इजी. और जगत शब्द बोलना है तो कैसे? जगत जगते जगति इकार जगति संसारे और जगति. हाँ एक और दिस वाज द गिवन सेंटेंस. वही ऊपर का. हाँ जो ये तो एकतः. हाँ सम्यक. एकतः द सेमस्ट आई थिंक. दीनता, हीनता, मूर्खता, दुष्टता. सम्यक. दुष्टता ओनली. Dushkata is fine. करेक्ट. देन And then rogam, रोगता. rogam, shokam cha. रोगता नो नॉट रोगता. Not rogata. करेक्ट. No. हाँ Rogam, I think. रोगः इट इज. शोकः रोगः शोकः दे आर पुल्लिंग ओनली. लाइक हाउ इन ईशावास्य तत्र को मोहः कः शोकः नॉट शोकम शोकः. सो रोगः. रोगः, हाँ शोकः, करेक्ट. शोकश्च. देन सन्ति. सन्ति. बहु सम्यक. शोकश्च सन्ति. करेक्ट. देन नेक्स्ट वन. दूसरी ओर which is अपरतः. अपरतः विद्वत्ता, सौख्य. सौख्यम. Kyam, no. करेक्ट. सौख्यम. देन Shantin. शांति ही. शांति ही इज पुल्लिंग. शांति. हाँ ओम शांति ही शांति ही ना. हाँ सौंदर्यम. सौंदर्यम. And would it be साधुत्व? साधुता is साधुता only. साधुता. साधुता सन्ति. साधुता च सन्ति. साधुता च सन्ति. अष्टम. चातुर्वर्ण्यः प्राचीनः परंपरा अस्ति. ओके वन सेकंड. सो परंपरा अगर बोलना है तो प्राचीन, प्राचीनः और प्राचीनौ और प्राचीने और प्राचीनम और प्राचीना. परंपरा. Always you know it will just follow most of the time the next word. तो प्राचीना परंपरा. सत्यम. And चातुर्वर्ण्यम. चातुर्वर्ण्यम प्राचीना परंपरा अस्ति. हाँ. Can we use puratana? हाँ you can say पुरातना. पुरातना it will become. Puratana also. परंपरा है ना. Whatever the word follows it will, because it is visheshana for that word, so it will be along with that one. Navama. Trailoki. पुराणाम. पुराणाम same thing. गरिमा. हाँ प्रियता. Premnaha. सम्यक. हाँ then प्रेम्णः. Is it प्रियताम? प्रियता. हाँ then Priyata. प्रियता as it is or प्रियताम? प्रियता. यहाँ पे एवरीथिंग इज एक प्रथमा एक वचन. गरिमा प्रिय महिमा अनिमा प्रियता. हाँ देन अहिंसा की. Is it ahimse? Ahimse. की षष्ठी. Ahimsayam. करेक्ट. अहिंसायाः you can say. अहिंसायाः विसर्ग लोप will happen. अहिंसाया. then महिमा. सर्वदा सन्ति. सम्यक. सदा विद्या. wait 1 second. Here we go. Another interesting thing. सदा रही है.
रही है, भवंती, then नो avanti, नो, सर्वदा 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 रही है, सो इट इज लाइक लंग, राइट? और rahi hai. Lang is rahat rahiti, bhutakal. या okay, so then it should be भवंती only. तो बावन रहती है बोलना है तो कैसे होगा? अच्छा, रहती है means vasanti, vasati will become, okay. Yeah. So here Shatra Pratyaya again, because this is also continuous tense. ING rupa. So Shatra Pratyaya, with Shatra Pratyaya how to say? शत्रुपति भवता, bhavata, right? Bhavata? Why Bhavata? Yeah. Because in Shatru we do that, no? That Bhavanti, you drop the in and you drop the... Really? No, that is only for Bhavan in that Shabda, like that. Here it will become Bahuvachanam anyway, na? You have to use Bahuvachanam word. Okay, but anyway, there is a better word. Say Vidyate, okay? Vidyate is there, right? What is this? Some kind of example from Shloka or something. Vidyate. Na Vidyate. So Katopanishad. Na Vidyate. Lokadu. Acha, that is na Lipyate. Na Vidyate. Na Vidyate, there are other things. Vidyate. Vidyate is a synonym for Bhavati or Asti. Vidyate. And in Vidyate, if you want to use Shatra Pratyayanta Rupa, it will become Vidyamana or Shanach. Shanach, Satyam, Shanach, Vidyamana. This Vidyamana is a very common word. In many books, there is a beautiful word actually. Vidyamana means whatever is existing, whatever is there. Vidyamana. Vidyamana Vastu. Vidyamana. Vidyamana Asti. Vidyamana Asti. Vidyamana is to denote anything that is. Vidyamanaha. Vidyamanam. In that shloka, na asate vidyate bhava, right? Nasato vidyate bhavo. Correct. Nasato vidyate. Vidyate, where that vidyate only is this. And vidyate is like bhavati there. So, vidyate, when you put shanach, it will become vidyamana. Vidyamana, Vidyamano, Vidyamanam, Vidyamana, whatever. Here Vidyamana. Dashama. Sadhanam. Then? Grihnati. Samyak. Tvam pustakam. पुस्तकम लेता है. Grihnati is there. गृह्णातु. Grihnatu is ले लो. गृहा. और लेना है वैसे. Grihnasi. Bhavat. गृह्णासी, correct. गृह्णासी. Okay, it's a straightforward. गृह्णासी. Aham phalam. गृह्णामि. Samyak grihnami. Then manushya dhanam. Manushyo dhanam. Sangrahan. Sorry, please repeat, Abaji. Sangrahani. Sangrahanati. Sangrah, not graha. Gruha. Sangrihnati. Sangrihnati. Only half hakara. Sangrihnati. Manushya dhanam sangrihnati. Then guru shishyam. Then anugrahnati. Anugrahnati. Anugrahanam karoti. Anugrahnati is easier. Is better. Vidvanata, Mahanata, Ashuddha to Shuddha. Vidvanata, Mahanata, Buddhimata nasti. This Mahanta people use is wrong. Not correct. आपके महानता, आपके बुद्धिमानता. No. Mahatta. Vidvatta, Mahatta, Buddhimatta. Shauryata, Dhairyata, Naishauryam, Dhairyam. Which pratyaya is this? Shauryam, Dhairyam and all?
just did इधर elect में हाँ वैदुष्यम हाँ क्या है? सत्यम श्यई श्यई प्रत्यय श्यई देन सौंदर्यता सामीप्यता नहीं सौंदर्यम सामीप्यम दो ख को लोट लंग विधिलिंग और लिट में बदलो वी डिड फॉर गृह धातु लोट लंग विधिलिंग लिट ऑल फोर ग्रह धातु के दोनों पदों के 10 लकारों के रूप लिखो, ये देखना है बाद में। त्व और ता प्रत्यय लगाकर, त्व प्रत्यय इज व्हाट? ओके, व्हाट सूत्र इज दिस फॉर त्व और ता? फेमस सूत्र प्रसिद्ध सूत्रमस्ति सम्यक तस्य भावस्त्वतलौ। तो विद्वस और ता, ये इस पांच में ता प्रत्यय त्व लगना है तो कैसे होगा? त्व विद्वत्वम, हाँ, देन महत्ता महत्वम, देन all five, धीमता धीमत्वम, दीनत्वम हीनत्वम, सम्यक। एंड ता लगाना है तो दीनता हीनता एंड अदर्स आल्सो लाइक दैट। शय प्रत्यय लगाकर रूप बनाओ, ये शुद्ध में किया है विद्वत्ता महत्ता, इट विल बी लाइक दैट, राइट? करेक्ट जी, विद्वत्ता महत्ता बुद्धिमत्ता, वैसे ही यहाँ भी विद्वत्ता महत्ता धीमत्ता, हाँ। बट हियर शब्द है दीनता एक ही हाँ, because there is no, if there is an existing one then it becomes two. correct, but here there is no existing. Yeah हाँ. दीनता हीनता। देन शूर धीरा, ये सब श्यय बनाना है, कैसे होगा? शौर्यम धैर्यम सौंदर्यम ब्राह्मण्यम। Okay, this is should be. See, you have to use kavya. हाँ, see, we have to try to use the vyakarana rule, because we know the words dhairyam, saundaryam and all. हाँ, kavyam. Dhairyam, saundaryam, brahmanyam we know, but we don't notice that the vridhi is happening there. If you know vridhi is ka only. हाँ, then good point, good. then sukha हाँ, सम्यक सौख्यम। देन वैदुष्यम में विद वस, दिस बिकम वाइद एंड उष, वाई संप्रसारणम, सत्यम। सो इमनिच प्रत्यय लगाकर रूप बनाओ, लघु गुरु महत मृदु अणु, कैसे? लघिमा, हाँ, लघिमा गुरिमा गरिमा, हाँ, गरिमा गरिमा, हाँ, महिमा, हाँ, अणिमा, गरिमा, मृदिमा, मृदिमा, सम्यक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।